My dear friends, Assalamu alaikum. I am Ashfaq Ahmad, delivering lecture on Qanun-e-Shahadat Order 1984. Today our topic is Article 42. Article 42 says, confession otherwise relevant not become irrelevant because of promise of secrecy, etc. If such a confession, if such a confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy or in consequence of a deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk, or because it was made in answer to questions which he need not have answered, whatever may have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession, and that evidence of it might be given against him, provided that the provisions of this article shall not apply to the trial of cases under the laws relating to the enforcement of hudud. अब जनाब ये क्या हुआ कि confession otherwise relevant not to become irrelevant, यानी कि confession अगर relevant है तो not to become irrelevant because of secrecy and secrecy and other grounds. If a confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant on the ground that it was made. On the ground, one, a promise of secrecy. Next, or in consequence of a deception practiced on the accused. Next, when he was drunk. Next, or in answer to questions which he need not have answered. Next, he was not warned that he was not bound to make such confession and it might be used against him. यानी कि ये जो 5-6 पॉइंट है, अगर ये भी है तो भी जो है कन्फेशन इररिलेवेंट नहीं हो जाता अगर वो अदरवाइज रिलेवेंट है। अब ये पॉइंट्स क्या है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट देते वक्त अगर उससे ये प्रॉमिस किया गया कि भाई आपका ये स्टेटमेंट जो है सीक्रेट रखा जाए, सीक्रेसी मेंटेन की जाए, या इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए डिसेप्शन प्रैक्टिस ऑन द एक्यूज, या जो है जवाबदार से धोखे से दिया गया ये बयान, या एट दैट टाइम ही वाज ड्रंक अगर वो नशे की हालत में थी, या in answer to questions which he need not have answered, या ऐसे सवाल जिनका देने का वो पसंद नहीं था, या he was not warned that he was not bound to make such confession and it might be used against him. Accused कोई वार्न भी नहीं किया गया था कि आप जो है बाउंड नहीं हो इस कन्फेशनल स्टेटमेंट देने को, and it might be used against him, यानी कि ये आपके खिलाफ यूज हो सकता है।
बात क्या क्लियर हुई कि कन्फेशन जो है अदरवाइज रिलेवेंट अगर है तो वो नॉट टू बिकम इररिलेवेंट बिकॉज ऑफ द अबव मेंशन्ड ग्राउंड्स। ये देखना है, ये अगर अदरवाइज रिलेवेंट है तो ठीक है, क्योंकि ये कोई सीक्रेसी या बाकी जो ये चीज़ें हैं ये अगर नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं है। अच्छा, इसमें जो प्रोविजन है वो ये है कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन हुदूद केसेस। अच्छा, ये आर्टिकल 42 जो है ये हुदूद में एप्लीकेबल नहीं। अच्छा जनाब, अब आ जाए आर्टिकल 43 of कानून शहर। Consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for the same offense. When more persons than one are being tried jointly for the same offense and a confession made by one of such persons is proved, a such statement, a such confessional statement shall be proved against the person making it, and we, the court, may take into consideration such confession as circumstantial evidence against such other। तो जनाब ये जो है 43 क्या है कि if more than one persons are tried jointly for the same offense, से अगर एक से ज्यादा accused persons सेम ऑफेंस में अंडर ट्रायल है तो ए कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ देम इज प्रूफ। प्रूफ किसके खिलाफ होगा? अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट। यानी एक ज्वाइंटली केस, क्रिमिनल केस जो है ट्रायल हो रहा है, उनमें से एक बंदे का कन्फेशनल स्टेटमेंट, उसमें वो अपने साथ जो कोई एक्यूज है उनको भी इंप्लीकेट करता है। ये कन्फेशनल स्टेटमेंट अगेंस्ट द मेकिंग, अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट तो प्रूफ है, लेकिन जो अगर कोई एक्यूज है उनके लिए ये प्रूफ नहीं है, उनके लिए ये ट्रीट होगा एज ए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। यानी कि कोर्ट जो है टेकिंग इनटू कंसीडरेशन एज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगेंस्ट को एक्यूज। ठीक है, क्लियर हो गया कि कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है देने वाले के खिलाफ तो वो प्रूफ है, बाकी अगर कोई एक्यूज जिनको भी इंप्लीकेट करना है वो एज ए प्रूफ नहीं बल्कि एज ए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लिया जाए। अच्छा, ये आर्टिकल जो है ये एप्लीकेबल है इन दी ऑफेंस, इन द ऑफेंसेस ऑफ अबेटमेंट ऑफ or attempt to commit the offense। ठीक है, अब इसकी जो जो डिटेल है वो इस तरह है कि जैसे जुडिशियल जो सुपीरियर कोर्ट्स में हेल्ड की है जुडिशियल कन्फेशन,
confession of proved confession affecting person making it, and others jointly under trial for same offense. Pakistan Criminal Law Journal 2000, page 865. तो ये क्या है? कंसिडरेशन ऑफ प्रूव कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग, जो अफेक्टिंग पर्सन है जिसने ये स्टेटमेंट दी, एंड others jointly under trial for same offense. इसमें भी इन डिटेल जाएंगे तो बात वही है कि जिसने ये स्टेटमेंट दिया उसके अगेंस्ट ये प्रूफ है, बाकी जो को एक्यूज्ड है जो ज्वाइंटली अंडर ट्रायल है उनके अगेंस्ट ये एज ए सर्कमस्टेंशियल। नेक्स्ट अथॉरिटी है जुडिशियल कन्फेशन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, duly certified can be used as proof against the person making it. 1990 Pakistan Criminal Law Journal, page 1978। तो ये भी उसी पॉइंट को क्लियर करता है कि जुडिशियल कन्फेशन रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन duly certified can be used as proof against the person, अगर उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने स्टेटमेंट दिया as proof against the person making it, not against the co-accused. A confession is proof against person making it, and the same is to be taken into consideration as circumstantial evidence against person who are being tried jointly for the same offense. 1992 Pakistan Criminal Law Journal, page 1910। अब इधर इसमें बिल्कुल क्लियर है कि confession is proof against person making it, and the same is to be taken into consideration as circumstantial evidence against person who are being tried jointly for the same. Next है judicial confession alone cannot warrant conviction unless it is strongly corroborated by any other independent source of reliable piece of evidence. YLR 2003, page 260। इधर क्या है कि confession only confession alone cannot warrant conviction. And only sole basis of the confession conviction cannot be avoided unless it is strongly corroborated by any other independent source or reliable piece of evidence. यानी कि जब तक के कोई strong corroborative evidence नहीं। Next है confessional statement alone cannot form sole basis for conviction. 1991 ESC, page 852। यानी इसमें भी वही बात है कि confessional statement alone cannot form the sole basis for conviction. Only confessional statement for conviction नहीं। Next है retracted judicial confession can be taken into consideration if corroborated.
1991 PSC page 8 यानी retracted judicial confession can be taken into consideration if corroborated. अगर इसमें corroboration है तो into consideration है, otherwise नहीं. Next है confession of co-accused could be taken into consideration against him and also against such other person against whom said confession was made, but only when they were being tried jointly. अच्छा, बात तो हुई confession of co-accused could be taken into consideration, यानी कि consider किया जाएगा against him and also against such other person against whom said confession was made, but only when they were being tried jointly. And condition हुई है कि एक से ज्यादा हो jointly trial हो रहा हो, क्योंकि स्टेटमेंट दे रहा है उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ है और बाकी के लिए एज ए सप्लीमेंट्री एविडेंस. तो नेक्स्ट है उसी में अंडर आर्टिकल 43 on the basis of confessional statement alone, conviction can be recorded and it can be used against co-accused provided it is proved inspiring confidence and corroborated by the other reliable and cogent evidence. When corroborative evidence is lacking, it is not safe to rely only on the retracted and uncorroborated confessional statement for the conviction of the makers for the conviction of the makers and co-accused. PAD 2008 Peshawar page 1. इसमें क्या है कि ये अथॉरिटी मतलब इस पॉइंट पर क्लियर है कि इस कन्फेशनल स्टेटमेंट का यूज अगेंस्ट co-accused. On the basis of confessional statement alone, conviction can be recorded and conviction can be recorded and it can be used against co-accused provided. अब यूज होगी provided क्या शर्त है? It is proved inspiring confidence and corroborated by the other reliable and cogent reason. कि अगर वो corroboration है and cogent evidence तो वो treat होगी या admissible होगी against co-accused. Where corroborative evidence is lacking, अगर corroborative evidence नहीं है, it is not safe to rely only on the retracted and uncorroborated confessional statement. अगर corroborative evidence नहीं है तो फिर ये सेफ नहीं है कि इस पर जो है रिलाई किया जाए. ठीक है, बस आज के लिए यही, आज के लेक्चर को यही एंड करते हैं और इंशाल्लाह we will meet in next session. Thank you.